औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टाटे बच्चों, आज फिर हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसका एक और टॉपिक हम आज लेंगे दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? इट इज a पावर n multiplied by a raised power n. You know that this a is called base and n is called exponent power. A is called base and n is called exponent or power. This is in multiplication. This is first law. This is in multiplication. When bases are same, you know that when bases are same, power should be added. We can write this as a raised power m plus n. A raised power m plus n. ठीक है? गोबरू में आयो यम साथ तो ये मल्टीप्लिकेशनस मज आशो पावर्सन मज आसन पावर ते आस्त बेस ते आस पावर ते आस्त बेस ते आस। फर्स्ट लॉ इज अगर तो मल्टीप्लिकेशन आशो करुन दोन रैशनल नंबरन यमन बेस सेम आसे पावर्स आसन डिफरेंट we can solve that question by this. When bases are same, power should be added. Let us take an example here. If we have to solve this question, 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 4. 2 raised to power 4. We should try to करन मैं वोनमुत यीत लट पावर तीत लट नंबर मल्टीप्लाई कर। ये हेको लिखित 2 into 2 into 2 ये हेको लिखित 2 into 2 into 2 into 2 4 लट हेकोन 2 जरब दिख या 3 लट हेकोन 2 जरब दिख। अगर तो शॉर्टस मज करू तो शॉर्टस मज लिखुन एग्जांपल आसे फिल इन द ब्लैंक्स आसे तो 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 4 तो लिखियो in multiplication when bases are same, power should be added. It is equal to 2 raised to power 3 plus 4 which is equal to 2 raised to power 7 तो ये गो आज जवाब। अगर तो अमुक वैल्यू आशो काडुन you have to find its value मतलब यह तो मल्टीप्लाई करुन यह करियो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यह करियो 2 कस लट जरब कर 7 फिर यह फिर पावर आसी तीत फिर जो ये अमुक यह करुन मल्टीप्लाई सो गो अमुक वैल्यू यह तो हाँ ये तो जी चीज हेचान हेचान तो वैल्यू ती कड़न बे हेचान यम सात ज नंबर आसान यमन बेस सेम आसे तिमन आसान पावर डिफरेंट या तो पावर 3 या तो पावर 4 तो लिखियो शॉर्टस मज लिखियो तो इट इज इक्वल टू 2 raised पावर यमन पावर्स करियो तो ऐड अच वना इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड चाहे यम ज नंबर आसान 3 नंबर आसान 4 नंबर आसान अगर फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर एग्जांपल मैं 3 raised पावर 2 multiplied by 3 raised power 3 multiplied by 3 raised power 1 3 raised power 5 multiplied by 3 raised power 1 3 raised power या 3 raised power 2 3 raised power 2 as भी ठीक है। यह को या 3 raised power 4 आज तो एक या तो देखिए 3 बेस 3 या तो 3 तो लिखिए 3 को यमन पावर सन करियो तो ऐड ज तो लिखिए 2 plus 3 plus 5 plus 4 ठीक है। इट इज इक्वल टू 3 raised power 3 गए 5 5 10 4 गए 14 3 कस लट करुन जरब यदि तो वैल्यू करियो 3 करियो तो ये 14 टाइम 3 raised power 3 3 ले 3 कस गए 5 5 5 कस गए 10 4 कस गए 14 गो बेस सेम when bases are same power should be added. This is first law in exponents and powers these are called the laws इथे कन अख सवाल दोयम पार्ट in multiplication in division अगर मैं सवाल a raised power m
divided by a raised power n, divided by a raised power n. In division, when bases are same, power should be subtracted. यहाँ को लिखते a raised power m minus n, a raised power m minus n. Let us take another example here for solving this law. ऐसे लिखो 4 raised power 3, 4 raised power 3 divided by 4 raised power 2, 4 raised power 2. It is equal to 4 raised power 3 minus 2. It is equal to 4 raised power 1. 4 raised power 1 means in value code that is equal to 4. That is equal to 4. You go 4. Let us take another example. 3 raised power 2, 3 raised power 3 divided by 3 raised power 2 divided by 3 raised power 5, 3 raised power 5. It is equal to this is in division. When we talk about division, in division when bases are same, power should be subtracted. Let us write this once. So 3 it is equal to 3 raised power 3 minus 2 minus 5, which is equal to 3 raised power 2 minus 5 minus. You know that when two subtraction numbers are added, that sign does not change. You go minus go plus, sign does not change. 5 to 6 it is equal to 3 raised power. सबसे वालों minus power हटाने खातर में ये reciprocal लिखूं. You go 1 upon 3 raised power 5, 1 upon 3 raised power 5. ठीक है? इन साथ नेगेटिव पावर इस हटाओ, नेगेटिव पावर ये इस हटाओ, सो पॉजिटिव बनाने खातर ची ये बोन कोन वाले ये नेगेटिव पावर ची ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता है पॉजिटिव. तो ऐसा ना 3 raised power minus 2, it is equal to 1 upon 3 raised power 2. तो ऐसा ना 4 raised power minus 2, it is equal to 1 upon 4 raised power 2. तो ऐसा ना 5 raised power minus 3, it is equal to 1 upon 5 raised power 3, 1 upon 5 raised power. नेगेटिव पावर हटाने खातर तो ये बोन कुन लिखुन दैट मीन्स अमुक लिखुन 5 ऑलरेडी पन डिनोमिनेटर आसान 1 ये 1/5 ये पावर बनान ऑलरेडी पॉजिटिव गो. अगर बह ये पावर ये 3 था 1 पावर दैट मीन्स 1 अगर बह हत लट जरब कर सह बराबर 1 से. ठीक है. दिस was regarding laws of exponents. Beim tar beim zallat ay fikri. तो ऐसे ना ऐसे इसका नुकसान सा सवाल a raised power यह है law आशियत फॉर्म में ये जो अपने सो डिवीजन फॉर्म में यह है law आशो तो यह फॉर्म में a raised power m divided by a raised power n. It is same as it is equal to a raised power m minus n, a raised power m minus n, but here the powers are different. Here the powers are different. Yim question yin to hai ish beach law a raised power m divided by a raised power n is equal to a raised power m minus n. It is equal to a raised power m minus. This is third law. First law is in multiplication when bases are same, power should be added. In division when bases are same, power should be subtracted. When this is in this form, a raised power m divided by a raised power n. When powers are different, it is in division. That is equal to a raised power m. This is same as this law. A raised power m divided by a raised power n. It is equal to a raised power m minus n. ठीक है? कजर गवा. सरने ना बस हम मिनीटर. Roll number 5. फिक्र चतरा. Yours to a topic laws of exponents. Cause law, asli law. In multiplication and division. In multiplication, वो अगर addition में suppose addition में 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4. 2 raised to power ये 2 2 into 2 into 2 plus 2 into 2 into 2 into 2. पत करियो तो ये 2 2s are 4 2s are 8 plus 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 शुरा से कुछ गए तो या ये साथ division addition से subtraction में सवाल तो अशी अलग सवाल कर ये तो इवैल्यूएशन में इन सवाल इन तो आइए अगर bases are same, power should be added. In division and bases are same, power should be subtracted. Yes form minus form that how them evaluation is that how a question ठीक है तो ये मतलब किताब खोजे भी यार आज खोजे भी किताब तो जो laws of exponents आसन ताइते हाइट किताब पे किताब से खोलें किताब पे पढ़ने इतने करने में
पर्नो अगर न समझ आमुत सह वन मे बे थ नोट कर पे कॉलेज पे सह वन मे पगह मे ना तो समझ कहें बह हा बे ठीक है क्लियर गो सारे लेट्स कंक्लूड टुडेस टॉपिक कर खत्म थैंक्स